My topic is functional dependencies. Okay. Hello everyone, I am Ansh Jain. Currently, I am pursuing my bachelor's degree from Acropolis Institute of Technology and Research in Computer Science and Information Technology. In this session, we are going to study the role of functional dependency, candidate key and how to find it, canonical cover, normalization, and advantages of normal form. So let's begin. Functional dependencies plays a crucial role in relational database design. They represent constants on the data, ensuring that relationships between attributes are maintained. Understanding functional dependencies is essential for designing efficient and reliable databases. Into candidate key using closure. Candidate key is a minimal set of attributes of a relationship that can be used to identify a tuple uniquely. It may or may not be a primary key or a super key. For finding a candidate key, we must follow these three steps. Step 1. Identify all the attributes. In a relational database, a relation corresponds to a table with rows and columns. Each row represents an attribute and each row represents a tuple containing values for each attribute. Step 2. Calculate closure. Apply the given functional dependency to derive new dependencies. This can be done by following some steps. First, initial set. अ, तो इसके अंदर क्लोजर कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 स्टेप्स का रिक्वायरमेंट होती है। पहला, हम चेक करते हैं कि इनिशियल सेट क्या है ना? हम पहले ये देखते हैं कि हमारी गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या हैं। सेकंड, हम क्लोजर जनरेट करते हैं। क्लोजर जनरेट करते हैं बाय यूजिंग इंटरफेरेंस रूल्स लाइक ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ऑगमेंटेशन, है ना? इससे हम न्यू फंक्शनल डिपेंडेंसीज बनाते हैं। देन हम इन दोनों स्टेप्स को रिपीट करते हैं until there is no interference left in the functional dependencies. And step 3, determine minimal set. Uh, Minimal set is the smallest set of functional dependencies that is equivalent to the given set. That is, it has same closure as the original set. Okay. Uh, then here is the example. Here is an example of candidate key using finding candidate key using closure. Uh, let's consider a relation R which has attributes A, B, C, D, and E with the following functional dependencies. A is dependent on BC, B is functionally dependent on C, D is functionally dependent on C, AC is dependent on D. We need to find candidate key using closure. To find to find closure, है ना? A we write closure as जिस भी एट्रीब्यूट का हमें क्लोजर निकाल रहा होता है उसके ऊपर हम एक प्लस का साइन लगाते हैं. As here you can see A plus B plus C plus D plus. So closure of A, that is A plus, is equal to A. It has A attribute which can be derived by the rule of reflexivity. Okay, BC, because BC is given, it is functionally dependent on BC, that's why BC. And D, अब you might ask how we can find D. So D can be find that C is functionally dependent on A and B is also functionally dependent on C, and C is functionally dependent on D. That's why D also comes in closure of A. Then closure of B. Closure of B can be find out B as reflexive rule. Okay, B comes with reflexive rule, and C, because you can see B is functionally dependent on C. C closure, C is dependent on no one,
सो सी क्लोजर है ना, सी क्लोजर डायरेक्टली हो जाएगा, तो सी क्लोजर इज इक्वल टू सी, जस्ट सी। एंड डी क्लोजर, डी में डी आएगा ड्यू टू रिफ्लेक्सिव नेचर, एंड सी आएगा क्योंकि डी सी पे डिपेंडेंट है। देन लास्ट क्लोजर हम निकालेंगे ए सी, जो कि हमने देखा पहले, तो डी डिपेंडेंट है तो डी आ जाएगा, देन ए और सी बाय रिफ्लेक्सिव रूल। अब हम इन्हें चेक करेंगे कि एट्रीब्यूट्स रिलेशनशिप में है कि नहीं। ठीक है, तो ए सी डी डिराइव कर रहा है सारे एट्रीब्यूट को, सो ये तीनों कैंडिडेट की हो सकते हैं। बी सी डिराइव नहीं कर रहे, किस डिराइव नहीं कर रहे एट्रीब्यूट्स को, तो वो कैंडिडेट की नहीं हो सकते। डी सी भी नहीं हो सकते। ए बी सी डी हो सकते हैं बट वो मिनिमल नहीं है, इसलिए नहीं हो सकता, नहीं, वो कैंडिडेट की नहीं हो सकता। सो कैंडिडेट की निकालते हैं तो ये देखते हैं सबसे ज्यादा एट्रीब्यूट्स के कौन से उसमें आ रहे हैं, कौन से रिलेशन में आ रहे हैं। सो देयरफॉर कैंडिडेट की आर ए सी एंड डी। थर्ड, canonical cover. In a database management system, a canonical cover is a set of functional dependencies that is equivalent to a given set of functional dependencies, but is minimal in terms of number of dependencies. ठीक है? The process of finding canonical cover involves three main steps, as as you can see on the screen. These three steps are, first, reduction. It removes redundant dependencies. If a dependency can be derived from other dependency, it's redundant. And elimination. Reduce the left-hand side of the dependency to its minimal set of attributes. And third, minimalization. Remove trivial dependencies where the right-hand side is a subset of the left-hand side. I know you didn't understand that. We will study an example for that. Okay. Consider the following set F of functional dependencies, where F functional dependency है और A functional dependency ये है, A dependent है B C, B functional dependent है C पर, A functional dependent है B पर, and A B functional dependent है C पर. ठीक है, अब now as we have studied, we apply step 1, reduction. There are two functional dependencies with same attribute on the left, A dependent on BC and A dependent on B. They are already in their simplest form. Second, elimination. Here we will eliminate the extra attributes. So in A B C पर dependent है और C extra है because A C पे dependent है, which can be derived from A B पे dependent and B C पे dependent है. So therefore by transitive rule A C पे dependent है. Thus we can reduce A B पे dependent है. Okay. And last step, minimalization. There is no redundant dependencies remaining. Hence the required canonical cover FC, canonical cover is can be represented by F and a small c. That is A dependent on B and B dependent on C. Okay, moving ahead. Now fourth, normalization. Okay, so normalization is a form of normalization is done in a database to reduce data redundancy in the database. So there are uh, six types of normal form. Okay, six layers of normal form. First is first normal form or 1NF. We also call it 1NF. ये सबसे बेसिक लेवल ऑफ नॉर्मल फॉर्म होता है और इसमें each table cell contains only a single value and each column should have a unique name. हर टेबल सेल में एक सिंगल वैल्यू ही होनी चाहिए और हर कॉलम यूनिकली नेम्ड होना चाहिए, मतलब कोई भी मल्टी वैल्यूड कांस्टेंट नहीं हो सकता इसमें. ठीक है, द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हेल्प्स टू एलिमिनेट डुप्लीकेट डेटा एंड सिंप्लीफाइड क्वेरी. ये डुप्लीकेसी और सिंप्लीफिकेशन में काम आता है. डुप्लीकेसी रिड्यूस करता है एंड सिंप्लीफिकेशन बढ़ाता है. सेकेंड होता है अपना सेकेंड नॉर्मल फॉर्म. Second normal form eliminates redundant data by
requiring that each non-key attribute be dependent on the primary key. This means that each column should be directly related to the primary key and not to others column. मतलब सारी की primary key पे dependent होनी चाहिए और किसी और column पे नहीं होनी चाहिए. Means primary key से हम बाकी सारे attributes को find out कर सकें. Third normal form. Third normal form builds on 2NF. 2NF required है अगर 3NF के लिए. ठीक है? That all non-key attributes are independent of each other. This means that each column should be directly related to the primary key and not to any other column in the same table. Fourth is BCNF, which is also called as Boyce Codd normal form. Boyce Codd normal form is stricter from 3NF that ensures that each determinant in a table is a candidate key. In other words, BCNF ensures that each non-key attribute is dependent only on the candidate key. मतलब सारी नॉन की एट्रीब्यूट्स डिपेंडेंट होनी चाहिए कैंडिडेट की पे. ओके. फिफ्थ इज फोर्थ नॉर्मल फॉर्म और 4NF. 4NF और रिफाइंड फॉर्म है BCNF का और इट इंश्योर्स दैट अ टेबल डज नॉट कंटेन एनी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी. मींस A is dependent on B, that is okay, but A is functionally dependent on B and C both, so the Boyce Codd does not work. Sorry, the fourth normal form does not work. Last is fifth normal form. Fifth normal form is highest level of normalization and it involves decomposing a table into smaller tables and remove data redundancy and improve data integrity. इसमें हम टेबलों को छोटी छोटी अलग अलग टेबल्स में बांट देते हैं जिसकी वजह से डेटा रिडंडेंसी कम हो और डेटा इंटीग्रिटी बढ़े. लास्ट इज एडवांटेजेस ऑफ नॉर्मल फॉर्म. ठीक है. नॉर्मल फॉर्म के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. ठीक है. Some of them are: it reduces data redundancy, normalization helps to eliminate duplicate data in table, reducing the amount of storage speed needs and improving database efficiency. डेटा रिडंडेंसी अपन ने अभी पढ़ा, डेटा रिडंडेंसी को रिमूव करता है जिसकी वजह से डेटाबेस इंप्रूव होता है, स्टोरेज स्पेस कम लगती है, बार बार वही वही डेटा सेव नहीं होता और अगर होता है तो एलिमिनेट हो जाता है, तो डेटा रिडंडेंसी बढ़ती नहीं है. इम्प्रूव डेटा कंसिस्टेंसी. Normalization ensures that data is stored in a consistent and organized manner, reducing the reducing the risk of data inconsistencies and errors. Sorry for that. है ना. Normalization also improves consistency. मतलब हर जगह एक जैसा रहना, एक जैसा काम करना, ये भी डेटाबेस का इम्प्रूव करता है नॉर्मल फॉर्म. Simplified database design. Normalization provides guidelines for organizing tables and data relationships, which making it easier to design and maintain a database. डेटाबेस सिंप्लीफाई हो जाता है. जैसे हमने अभी सारे नॉर्मल फॉर्म पढ़ा, उसमें डेटाबेस हमारा धीरे धीरे जितने नॉर्मल फॉर्म बढ़ाते आते हैं उतना डेटा सिंपल होता जाता है, समझने ईजी हो जाता है, हमारे लिए भी सिस्टम के लिए भी. इम्प्रूव क्वेरी परफॉर्मेंस. नॉर्मलाइजेशन normalized tables are typically easier to search and retrieve data from, resulting in further query performance. हमने जैसे भी पढ़ा, डेटाबेस को सिंप्लीफाई करता है तो वो क्वेरीज भी जल्दी लौटा के देता है. जैसे आपने व्यूइंग, जॉइनिंग, कोई सी भी टफ क्वेरी चलाई उसको जल्दी रिटर्न करके देखा. क्यों? क्योंकि डेटा बहुत सिंपल है. इजियर डेटाबेस मैनेजमेंट, है ना. छो इजी होता है, स्मॉल साइजेस में होता है तो इम्प्रूव मेंटेनेंस की इतनी जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना. और मैनेजेबल हो जाती है टेबल्स, मेक इट इजियर टू ऐड, मॉडिफाई एंड डिलीट डेटा. एंड लास्टली, थैंक यू.